Oh, good evening. Good evening, sir. We were in that chapter 1, is it? Finish किया? नहीं ना? नहीं किया? चलो आज जरा seriously finish करते हैं. Okay, today also one of your person is absent. A girl. She is left. She is left or still there? Still there. She's in. But why she is not coming? She is ill. Oh, ill. Yes. And in the last class, she did not know that there was a history or geography. Oh, today she is not well. Today she knows, but she is not. Then, just tell me, as per the notes, where did I? We have done all the proof. Why Earth is spherical? Earth unique planet है वो दिया? Yeah. तो एक काम करो, put the question. This is actually the last question and very important. नहीं, Bedford level क्यों हुआ? नहीं हुआ. Bedford में level हुआ. नहीं, सर रॉड वाला क्या? हाँ, रॉड नहीं है, स्टिक है. Bedford वो कैनाल था जहाँ उन्होंने स्टिक लगा. एक काम करो, show me the notebook. Almost done. Yeah, थोड़ा सा एक leave 4-5 lines and write the new question. Why? Why? Oh, the Polish line हो गया. हो गया. Jesus के साथ ही निकल गया. Why? Earth. Actually, be Earth pronunciation. Why the planet Earth is referred as? Why? Planet Earth is referred as home for humankind. बस छोटा-छोटा reason है. I'll very quickly give it, है ना? फिर explain भी करता हूँ. Then we will quickly move to the second chapter. I really want to push your portion good and straight, है ना? देखो, answering in any part of geography, economics you don't have. History, पहला challenge क्या आता है? लड़के ने बोला क्वेश्चन पेपर ही चैलेंज है ना? दूसरा चैलेंज क्या है? आंसर लिखने का चैलेंज. तीसरा चैलेंज क्या है? आप खड़ूस है, मार्क्स इतना गंदा देता है. चौथा चैलेंज क्या है? मैं भूल जाता हूँ, है ना? तो आई फील द फर्स्ट चैलेंज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अभी लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? What I am expecting from you? लड़का तो बोला nothing. अरे बोलो, what is the question? हाँ, क्या है? Very good. It's very smartest AWS. देखो, first तो Earth मालूम है? Yes. Why it is the home and why it is mainly for humankind? It is home for humankind as the human population grows. It is as. तो पहले तो लिथोस्फीयर बोला मैंने, करेक्ट? दूसरा बोला हाइड्रोस्फीयर. फिर इन दोनों को मिला के एक और एक स्फीयर बनता है, वो क्या है? बायोस्फीयर. ये सब किधर मिलता है? अर्थ में ही है. So next I can say it is equidistant. What is equidistant?
It is neither too close, neither too close nor too far from sun. और क्या है? It is the only planet. Lithosphere. Sorry, atmosphere नहीं था. So atmosphere. It was the only planet where what is easily available? Light is soil. soil. Soil के साथ क्या मिलता है? बोलते नहीं सर मुझे पसंद नहीं मिट्टी में green plants. चलो और क्या है जो अर्थ में? Food. अच्छा ठीक है. We can just start, है ना? सर चपाती रोटी सब क्यों नहीं? स्टार्च मतलब रोटी है. और क्या है? Rice. चपाती की जरूरत राइस. और क्या है? Let me see anybody recognize the meaning of this word. Zenith. It is an option. वाह क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला? ये तो आता नहीं. Zenith का दूसरा वर्ड और कुछ नहीं है. We call it as किसी ने बोला horizon. Horizon नहीं. Horizon एक ही बात है. Is it horizon really with there? Is it really horizon there? No. फिर क्यों लिख रहा हूँ? I see. This also proves that Earth is spherical. ये sky है. इतना गंदा नहीं है. चलो ठीक है यार मान लिया. और ये land surface. The point where both are seeming to be meeting is the horizon. तो हमारा बच्चा यहाँ से तुरंत भागा चलो सर horizon जाते हैं. इधर जाने के बाद दो point और आगे दिखा. है ना? It's like that oasis. You know what is oasis? What is you know? Yes. What is that? ठीक है मैं समझ. Oasis is the मुझे आता नहीं कुछ. Oasis is the part in a desert where we can find water. तो फिर उसको desert क्यों? Desert में थोड़ा ही पानी मिलता है. थोड़ा ही पानी मिलता है इतना. इतनी ज़्यादा. इससे normally we understand Earth is the only planet in the solar system where you and me are happily living. Yes. The word happily doubtful है but living है. Living है. मतलब बेटा happily क्यों नहीं है? तू आ जाता है हर हफ्ते में. प्लस होमवर्क भी देगा अभी है ना जो मैंने ऑलरेडी 10 का स्टार्ट कर दिया. फिर ऊपर से फिर हर लेक्चर में कुछ ना कुछ बोलता है और स्कूल भी है. फिर हैप्पी कहाँ से हुआ मैं? मतलब फिर हैप्पीली मतलब क्या डेफिनेशन है? आई विल नॉट से. You will start. चलो आप से. Happily living on earth. What is you understand? Simple. It is not going to be recorded or telecast. अच्छा आप happily का मतलब समझो. As an adult or as a child? यार तो अभी क्या है? वो अलग है. तो अच्छा वो बात करते हैं. हाँ. तो बना ही नहीं तो क्यों फिर वो पूछ रहा है? 18 हुआ क्या तेरा? नहीं. भाई जरा कंट्रोल. I always believe students enjoy their childhood रुक जा हाँ मुझे मालूम है. सर जब मैं चाइल्ड था ना पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में डाल दिया नर्सरी में है ना. फिर क्या है सर उधर एक दायमा आती थी. हाँ बाथरूम लेके जाती थी और फिर टीचर डांस करता था. मैं सुन रहा. And now I am in 9th standard. Okay, you're 4 years old. अब इसका 18 years भी पकड़ता. Now you are how much here? 13? 14. चलो 14 years. Sir, now tell me, now 4 years में मेरा childhood था, now 14 years में है. I always believe these channels are beautiful. With channels, TV channels. I don't watch any channel except news channels. I don't watch channels. Channels at all. I remember there is a channel called Colors. Colors करके एक channel है और वो channel का नाम Colors इसलिए रखा है कि that it will fill colors in your life. हाँ color उड़ गया. So I always believe you just imagine if Earth was not there. परंतु बच्चा बोला no school, no homework, है ना? You will also be not there. ठीक है, what a big difference does it make? Because summer vacation. What does it mean? Sir, we are running out of Bombay. It might be the most kheda gaon of your area, holidays. But you love that area. Pahla.
स्कूल बंद है ना, एंड मम्मी हर रोज सुबह जल्दी उठाते भी नहीं. And the most important thing, we are changing our life from monotonous. You know what is monotonous? To a life which is called interesting. Monotonous means boring, same cheese again. But then Earth is one planet which is always changing its structures. Did I not show you that video? So, Earth ka video dekha hai na? 8.5 billion years before. But closer, we close to came 150 million years. Then came that four-legged animal, human being. All the human being disappeared except that Homo sapiens. Who were Homo sapiens? The wise man. Who is the wise man? Because his brain size was well developed, like your brain and my brain. So this is what I'm saying. Definitely Earth is the home for. Abhi clear hai? Abhi shall I say more explanation or shall I give the notes and wind up the chapter? एक्सप्लेन करूं? ठीक है, ठीक. तो एक काम करते हैं, पहले आंसर स्टार्ट करते हैं, फिर साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करूंगा. लाइफ इज पॉसिबल. आंसर राइट. Life is possible only on the planet Earth. Since lithosphere, hydrosphere, lithosphere, आएगा, hydrosphere and which sphere? Atmosphere. उसी को तीनों को मिला के यार, which provides an ideal conditions, which provides an ideal condition for, I'll go very slow because मैं 10 को आज बहुत peacefully lectures दिए, आपको तो और peaceful, for plants, animals and human beings. Let us take a small pause here. Is this line beautifully written? Yes. So who could explain me beautifully? Yeah, अरे बोलो. Look, when you and me have seen astronauts going to space, are they wearing a very common dress like you and me? No. क्यों? अरे यार क्या नहीं पहनता बेचारा. And जैसे ही वो अर्थ का ऑर्बिट से बाहर निकलता, then he becomes a flying giant. क्यों? सर कुछ नहीं, उधर ग्रेविटी नहीं है. And I don't know whether you have seen that video or not. There was air भी नहीं है. हाँ, air तो नहीं, बिल्कुल नहीं. There were some Americans who had gone to a picnic. And ये आजकल अमेरिका में बहुत कॉमन हो गया, SpaceX. And they take you to the X out of this. And जैसे ही वो कैप्सूल आके वो गिरा, ये तुरंत लोग पब्लिक गया and they were hugging each other, kissing each other. And one एक ब्यूटी लेडी है, थोड़ा सा गंदा ब्यूटी था, ये प्रेस वाले ने उसको पकड़ लिया. And then she was explaining, oh ma, what I explained, it was so silent. She's trying to explain how the space. Oh my God, the beauty of the earth. Like क्यों? तू निकल गई ना उसले earth beautiful. And I can't tell you express. फिर छोड़ना, फिर क्यों बोल? मैंने तो अगर उसको बोलने नहीं छोड़. And it was so calm and so peace. I hope you understand. Well, no, I don't understand. मैं गया किधर? So we say Earth is a blue planet. Yes. Why? Because it has water. It is the reflection of the sky into the water. That is why it appears blue. जो pollutions है ना, वो dark spots दिखता है. ये मैंने बोल रहा हूँ, NASA और ISRO बोलता है. और जब 1 minute ये बोल देता हूँ, then you can ask your doubt. Then when you and me are putting that lamps, especially during Deepavali, NASA तुरंत pictures भेजता है. ये देखो, India दिख रहा है space से. तो मैंने बोला उतना खर्चा करके क्यों जा रहा है, इधर आजा. यूपी आजा, है ना. Every year they are setting up a Guinness record.
I don't know, 3.5 lakhs of oil lamps were lit in celebration of Ayodhya, the greatest ruler called Lord Shri Ram. है ना? तो मतलब यार इतना लीटर्स ऑफ ऑयल लोग वेस्ट करता है, अगर मेरे पास रहता तो पूरा जिंदगी भर में भजिया और समोसा चलता फिर किसी ने साइड में बोला आइए साहब हमारे श्री राम के ऊपर आते हैं, इसको बोला नहीं नहीं आपका श्री राम तो मेरा भी है, इसका मतलब इतना लीटर सा एंड जलाता कैसे यार and to be very frank, you lit 10 lamps at your house, how heat it is spreading. अगर ये ज्योग्राफी टीचर की तरह उधर जाके बोले ना पब्लिक ने मुझे ऐसा धोएगा फिर राम से मैं रावणा बन जाएगा. करेक्ट. बट फेस्टिवल्स आर फेस्टिवल्स. मुझे याद है शायद आपके घर में भी होता रहेगा, दीपावली आया कर्टन्स भी नया लगा, पेंट मारता है. मतलब दीपावली का और विंडो का क्या संबंध है और दीवार को अगर नया पेंट मारा तो दीपावली नहीं आए. एंड देन दे विल बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स. यार घर पे बनाना इसमें क्या है यार, तो इकोनॉमिक टीचर है, हर जगह कंजूसी मत. फिर बोनस आता है, परचेज होता है. आई रिमेंबर अर्निंग मेंबर अभी मैं हूँ, दीपावली आया और हमारा दिवाला निकल गया. फिर बच्चे तो खुशी से दीपावली आई, दीपावली हाँ पट्टा तो मेरा ही है, तेरा क्या पट रहा है? नहीं बाबा मॉम पट रहा है, हाँ पट रहा है पापा पट रहा है. Certain countries they have this crackers, no noise at all and no smoke at all. सर ये कौन सा पटाखा है? हाँ वही सिंगापुर जहाँ डॉग्स को बार करने भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो बोलता नॉइज पोल्यूशन हो गया. इधर तो हमारा टीचर इतना so we always believe, why I am saying earth, because no other planet will support the life. Now you can ask it. हम लोग नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो स्काई ब्लू या फिर ऑरेंज दिखता है. Orange when the sun is setting. तो दिखता है. हाँ हाँ आगे ऊपर से देखते हैं तो it is only blue. That is why they say blue and absolute silence. क्योंकि हमको वो साइलेंस तो बिल्कुल पसंद नहीं है. ऊपर से किधर आवाज आएगी यार तुझे कैसे समझ अभी क्या मतलब when you are exiting the earth's orbit ना, you are into space, there is no air, vacuum. अगर आवाज भी आएगा तो ट्रैवल कैसे करेगा? साउंड needs some medium to travel. जब तो मीडियम ही एब्सेंट है, ट्रैवल कैसे रहेगा? Then how does one astronaut connects to the another? walkie-talkie. What else? अरे वॉकी टॉकी के लिए भी आवाज जाने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना. They are getting connected from the ground control station. Next time any rocket is getting launched, now you see the counting. It is not from 10 to 1. It is from 100 to 1. कभी देखा नहीं है? And they keep counting. 99. Keep check. They say S check ready. अगर किसी ने not ready बोल दिया उस दिन cancel. रॉकेट बोलेगा पिछले 15 दिन से यही चल रहा है. मुझे लॉन्च पैड में डाल दिया, कोई ना कोई अपना गुस्सा निकालता रहे. कल तो 79 बोला कि नॉट रेडी, आज 52 बोल रहे नॉट रेडी, कल पता नहीं कौन बोले. एंड दे चेक राइट फ्रॉम 100 to 1 एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज टू बी सेइंग चेक रेडी टू गो, तब जाके वो रॉकेट निकलता है. वरना तो बेचारा रॉकेट उधर शोपीस की तरह ही खड़ा. I don't know whether you have seen our ISRO, correct? The rocket which was to be launched in the air came in a bullock cart. Yes. And APJ अब्दुल कलाम को देखिएगा बेचारा साइकिल में लेकर आ रहा है उसको. रॉकेट बोलेगा मेरा जिंदगी देखो, बैलगाड़ी में चल रहा हूँ. ये तो फिर भी ठीक है सर. अभी हमारा जो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरता है, गोल्ड मेडलिस्ट है पर रिक्शा में जा रहा है. रिक्शा में तो जा रहा है. कुछ लोगों तो एथलीट था सर, फिर क्या भागते भागते कर निकल सर. पैसे नहीं थे सर, स्पॉन्सर नहीं होता. ये हमारा क्रिकेटर, क्रिकेटर के पास तो पॉकेट ही नहीं है कहाँ रखने का पैसा. बट हमारा कबड्डी प्लेयर हुतू करके कबड्डी निकल ही जाता है. एंड हमारा ऑर्चर एम तो लगाता है बट पैसा नहीं है सर. सो वी ऑलवेज बिलीव दैट इंडिया इज वन कंट्री व्हिच हैज गॉन huge with the development of which station? ISRO. You know the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Where it is? India.
Such a big answer I've never expected from you. Bangalore. And what is the full form? What is the full form of NASA? National Aeronautics Space. हमेशा कुछ भी. चलो, let us write point number 1. Lithosphere. What is it? Lithosphere. Next question. Points, reasons there are. Why it is the human. Okay. Outermost layer of the earth. Outermost layer of the earth, which includes solid. Outermost layer of the earth, which includes solid part of the mantle and crust. Solid part of the mantle and the crust. तो outermost कैसे हुआ? वो एक्चुअली ट्रस्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने बोर्ड दे दिया तो दे दिया. रख लिया. एक बार अगर निकल गया तो निकल गया, तो नहीं गया. आता है अगर वो बूमरैंग का शेप में एरो बनाया है. Have you seen boomerang? Yes. Have you used it any part of your life? Yes. नहीं, तब कहाँ है? वो खरीदा था इधर से. And boomerangs are thrown in such a way ना, if you throw exactly ना, एक पूरा एक semi या half circular के सीधा आपके हाथ में आता है. It's like whatever. मारता भी है. मारेगा तो फिर रिटर्न नहीं आएगा ना, it will fall. आप लोग ने जंगल बुक देखा है? नहीं, बूमरैंग उल्टा पकड़ मारता है. तो पकड़ना, मार खाने की उधर कर रहा है. ये बेचारा इतना सीधा है लगता है ना? नहीं मतलब जलेबी. जलेबी नहीं चलो लेटर राइट. चलो हाँ, उसमें ये बूमरैंग का उन्होंने बताया कैसा ह्यूमन बीइंग पहले बूमरैंग स्टार्ट किया. It is written by that Mrs. Rudyard Kipling ना, and she is the lady who has told that boomerang इंडिया में ही उन्होंने जनरेट किया. बट आजकल अमेरिकन और न्यूजीलैंड बोलते हम लोग ने, अरे ये बूमरैंग इंडिया ने बनाया पहले. इनफैक्ट वी हैड अ कर्नाटका किंग हु हैज डन वन भाला, मतलब दैट arrow which can be thrown, it will not only be cutting the enemy and it will come back to him. Yes. वो एक्चुअली कोई तो मूवी में भी दिखा है, वो शार्प रहता है, तमिल मूवी में दिखा है. It goes and cuts the enemy, कट के साथ वो बाहर भी रिटर्न आता है. You don't know that? ALSH, it's kind of. ALSH किधर है मेरा नाम? और क्या है फिर? Very bad pronunciation. ABA. Boy, you pronounce my name in a wrong way. ALSH. The second name I have hidden from you guys. Oh yes, you are something. नारायण मूर्ति का छोटा भाई है. मतलब बन सकता था. बेचारा वो भी अकेला, मैं तो अकेला नहीं था. पापा को बोला यार वो नारायण मूर्ति को पकड़ता. You know the richness of that man? एक सिंपल सा स्टोरी सुनाता हूँ. स्टोरी नहीं, it was a truth. You know the wife of that person name is Mrs. Sudha Murthy. She is a very rich lady in the world. उसकी जो बेटी है जो ऋषि सुनक से शादी किया है, कोई बोलता है कि उसका लिक्विड एसेट्स है ना क्वीन ऑफ इंग्लैंड से भी ज्यादा है. हाँ, उसके पास जो कैश. Once she has traveled to London and normally वो इकोनॉमिक क्लास में जाती है, VIP क्लास में नहीं जाती है. So she was obstructed by the English fellow. So हमारा पासपोर्ट देके वे चालू रहता हूँ. So this lady was asked 1001 question, where are you going? क्यों है? He doesn't know that she is Mrs. Sudha Murthy, wife of the Infosys founder. And then उसकी बहन ने बोला अरे बोल देना तू कहाँ जा रही है लंदन में. उसने बोली क्यों बोल लेता है? नहीं बोलो. तो this lady told I'm visiting Downing Street, 10 Downing Street. तो वो gentleman जो custom officer था, he was very much laughing. Oh, you are going to 10 Downing Street? You know what is that? Because 10 Downing Street is the place where the Prime Minister of England stays. उस टाइम पर ऋषि सुनक था. उसका क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बेटा कैसे बने? उसका बच्ची का हस्बैंड है. Son-in-law. So that fellow got up from the seat. You are ऋषि सुनक. तो उसका वाइफ, उसका जो मिसेस सुधा मूर्ति का जो बहन थी, उसने बोला you know who is this lady? Then he asked who is this lady?
your prime minister touches the feet of this lady. So I'm deeply influenced by this Narayan Murthy and Sudha Murthy. She's a writer, author, philanthropist. बहुत कुछ करती है and very simply. इसलिए आपने नाम अलग ही मुझे यार मैं जब बॉर्न हुआ था मेरे पापा को इनके बारे में मालूम भी नहीं था, तुरंत मैं नाम जोड़ लूंगा, चलो तुझे इतना का नाम का शौक है और एक नाम बोल रहा हूँ, लेट मी सी हाउ डू यू आइडेंटिफाई, ही इज अ रनिंग क्रिकेटर नाउ, हु नारायण रचिन रविंद्र you know why did his name is, this stands for Rahul, ये सच है and this is stands for Sachin. And उसके नानी अभी भी बैंगलोर में रहती है, उसका पापा ने he was a big fan of Rahul Dravid and big fan of Sachin, तो दोनों को मिला के उसने रचिन रखा है उसने. हाँ this is true. बराबर फील्ड में हाँ और एक भी क्रिकेटर है उसका भी नाम ऐसे कुछ है, वो सचिन के नाम से उन्होंने लगाया. चीन देखो राहुल सचिन, राहुल द्रविड़ का नाम मिला के उसने रचिन रविंद्र रखा है. ऑस्ट्रेलियन का बेटी का नाम उसने भारत रखा है, इंडिया है. भारत क्या फर्क है? चलो हाँ सर वैसे डाउट तो मेरे चैप्टर कर जाएगा. हाँ नारायण मूर्ति किस फील्ड में इतना बड़ा स्टोरी सुना है तुझे मालूम नहीं. हैव यू हर्ड अबाउट इन्फोसिस कंपनी? दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कंपनी. इंडिया में ऑफिस कम है, अमेरिका में ऐसा है. आईटी कंपनी. The owner is this lady, Mrs. Sudha Murthy, founder है, and उसका husband उसको चलाता है, CEO. How come you guys, तू तो बोलता न्यूज़ चैनल देख
एकदम क्या इंस्पिरेशन हाँ तो दिखाऊंगा ना, जैसे जैसे टाइम जाएगा दिखाऊंगा. राइट द सेकंड पॉइंट. Lithosphere of India, यस सर which contains rich minerals, and provides, which contains rich minerals and provides needed nutrients. Careful with the spelling, huh? Needed nutrients for several life forms. Life, not life. Huh? Several life. Second point, like hydrosphere. I think सर लिथोस्फीयर आउटर लेयर होके मैटर एक्चुअली क्रस्ट है ये, उसके बाद ही लिथोस्फीयर आता है. मैंने वो सेंटेंस दे दिया पुराने. मैंटल तो बहुत अंदर है ना. हाँ तो लिथोस्फीयर में कैसा आया 0 to 75 किलोमीटर आके मैंटल आता है, समझा. हाँ. क्रस्ट तो उसके पहले है. When I'm going to start you the second chapter, structure of the earth, I'll teach you. Don't worry. Second point, nutrients for all life forms. Second form लिखो hydrosphere. Water. Second most essential component. Water. फर्स्ट है First is air ना. Air में तो oxygen. Second most important component of life which is bare minimum, which is bare, BARE, minimum, ARE. ओके यार तू नारायण मूर्ति के ग्रुप से आता है और तुझे इंग्लिश नहीं मालूम. अरे उसका इतू सा भी अगर मिल गया ना, यू विल बी द करोड़पति इन इंडिया. उसका उतना बड़ा एम्पायर है. इंडिया में तो कम है उसका, अमेरिका में सबसे ज्यादा है उसका. उसका वाइफ
रिमोट फ्रॉम द ऑफिस और उसी टाइम 1 घंटे में निकल गए। 1 ही घंटे के अंदर। ये हमारे मिनिस्टर्स लोग 2-2 साल लगाते थे वो बंगला खाली करने। चलो सेकंड पॉइंट लिखा हाइड्रोस्फीयर। थर्ड पॉइंट एटमॉस्फेयर which provides needed oxygen and nitrogen, which provides needed oxygen and nitrogen for all life process. For all life process, PROCESS. In its absence, in its absence, no photosynthesis. You know what is photosynthesis, na? Okay, you ask for science, right? Is possible. So you don't get only photosynthesis is not possible. That's all. Yeah. Next setting, you write biosphere. The being REALM, Lima, combined. REALM. L is silent, na? Realm. Combining atmosphere. और क्या है? तीनों स्फीयर का नाम ले। नहीं मन। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। अबे बुद्धू है तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है। तो वही बोलना फिर। तो लिख। For a real tangled mass of bones and flesh, little bit of blood in it. वो तो मैंने देखा है ना। मार्क्स आने के बाद हाँ बोलना क्या? मार्क्स आएगा तो अपने मार्क्स। Yeah. Together, biosphere provides. Together, biosphere provides. Biosphere provides all necessary living conditions. Together, biosphere provides all necessary living conditions. Change the paragraph. Hence, provides all necessary living conditions. Hence, we can आज कैसे भी करके चैप्टर कंप्लीट कर दूँ 10 मिनट है मेरे पास 15 मिनट. Hence, Earth is no doubt. Earth is no doubt. Right, my dear. Earth is No doubt an ideal planet for humankind. एक आंसर है. हो गया खत्म. But now I'll be asking you to read. I think all are having textbook, na? Shape and size of the Earth. Keep a pencil ready. We'll mark and we'll finish this chapter in next 10 minutes. And if time permits, I'll start chapter number 2. Grids. है ना? होगा. आप इस पर. सब पढ़ ले. हो जाए. तो book ले. चलो he's reading. हाँ चलेगा. Shape and size of the Earth. चलेगा. हाँ you read. You just listen. ठीक है यार. Listen. हाँ read. Shape of the Earth in today's age of space exploration, the spherical shape. Hey, space restoration. Spherical shape. ना restoration कुछ word पड़ा? Space exploration. हाँ exploration. The restoration. The Go ahead. spherical shape of the Earth is an obvious fact, but this was not only the case. People in the past spent considerable time
wondering about the shape of the earth. At first, people believed Put some life into the reading, na? Wondering about the shape. where is the earth? छोटा बहुत बड़ा है कौन सा नीचे पड़ रहा है वो। तो एक काम कर तू चुपचाप बैठे तू बैठ हाँ the earth is not a perfect sphere. देखो when I Because taught this you height- wait we always say earth is a spherical in shape. Is it perfect sphere? No, sir. Then what do we give that word in geography? It is called as oblate Spheroids. spheroid नहीं है Sir, spheroid. spheroids है सर वही तो बोला क्या? मेरा कान में steroids हो तो Spheroid. ये याद रखना oblate spheroids go ahead Yes. It bulges slightly at the center and is flattened at the poles. Now if I show you earth whenever I draw the picture it is like this not exactly but okay है ना both north and south pole are tapering whereas ये जो part है bulging Sir, I gave the example of a traffic police belly burger जैसे। है ना इतना बड़ा और ये इधर है हमारा इक्वेटर कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न whereas NP and SP are becoming narrow right that is what he is reading go ahead At the center and is flattened at the pole. In the olden days, the earth was considered to be a flat disk with steep edges. Aryabhatta, the 5th century Indian astronomer and mathematician, believed in the round shape of the earth. He said that the earth was spherical in shape and rotated on its axis. In the 6th century, Greek philosopher Pythagoras said the same thing. Today, we have convincing evidence to prove that earth is spherical in shape. Proves that did we not prove evidences first part of the chapter वही था ना earth is spherical but not flat अभी शुरू किया पढ़े। Starting- well हम लोगों ने starting first lecture में वही है Proof that the earth is spherical in shape. ना ये मत करो चलो सीधा आगे जाओ what is the last part of the chapter Last part, इसमें बहुत है। ये that the planet also- ये अभी मैंने दे दिया ना अभी हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कितना साइकिल है एक कार्बन हाँ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पढ़ा है। कब पढ़ा है स्कूल में पढ़ा होता है। मैंने पढ़ा है राइट द क्वेश्चन इन योर नोट डोंट वरी डोंट ओनली हेडिंग देगा देख लिख सकते हैं मॉर्निंग ए जल्दी से वॉल्यूम लेकर आओ आई गो थ्रू विद द वॉल्यूम है ना एवरीडे लिखना है राइट डाउन Yes, sir. explain the 4 life-giving cycles. 4 life-giving cycles. Done. तो आंसर में 1 लिखो अभी लिखना है। हेडिंग लिखना है One, न्यूट्रिशन साइकिल nutrition. लिख जा आई एक्सप्लेन इट 2 कार्बन साइकिल Space छोड़ना। नहीं आंसर तो आपको क्या? नेक्स्ट Three, nutrition. नाइट्रोजन साइकिल Nitrogen cycle. Last, oxygen cycle. is oxygen लाइट नहीं है कट होता ना you tell me the question is asking which cycle Life giving cycle. अब ये तीनों में लाइफ गिविंग साइकिल है क्या बस कार्बन छोड़ के सारे। कार्बन भी इंपॉर्टेंट है क्या काम कर रहे हैं? हाँ क्या काम का है देखो the first cycle that you have written is nitrogen in fact when we study atmosphere which is the maximum number nitrogen कितना परसेंटेज है 78% ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है 21% हो गया 99 और 1% आके इनर्ट गैसेस इनफैक्ट मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि अगर नाइट्रोजन की जगह पर अगर हमारा ऑक्सीजन 78% होता तो कितना अच्छा बट कितना अच्छा नहीं होता पूरा प्लांट मर जाता और अब वो ऑक्सीजन को क्या खाली पेट लेते रहेंगे हाँ नाइट्रोजन का साइज बहुत कम हो जाता है। हाँ नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना भी प्लांट्स ग्रोथ है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है तो फर्स्ट साइकिल दैट यू हैव रिटन इज न्यूट्रिशन अभी सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ इन स्कूल डेज यू माइट हैव स्टडीड व्हाट इज हर्बीवोर्स उसके ऊपर कार्निवोर्स उसके ऊपर ओमनीवोर्स और ओमनीवोर्स में ह्यूमन बीइंग भी आता है
तो पहला जो ग्रासेस उगता है ना प्लांट, इट इज ईटन बाय द हर्बीवोर्स। गोट समझ लो, गोट्स। अभी गोट क्या करेगा, वो जो एनर्जी न्यूट्रिशन जो ग्रास में था, इट विल यूज अ बिट फॉर इट्स लाइफ साइकिल, करेक्ट। फिर जो कार्निवर्स उस पे खाता है, अभी एक लायन हैज किल्ड द गोट एग्जांपल एंड इट हैज ईटन द गोट, तो जो बचा हुआ एनर्जी गोट में था वो किसको पास हो रहा है, लायन को पास हो रहा है। अभी लायन वो न्यूट्रिशन अपना बॉडी ग्रोथ के लिए यूज करेगा। When a bigger animal comes which is going to eat the lion, tiger, whatever, that will pass the nutrition to the another, तो इसी को हम लोग न्यूट्रिशन साइकिल बोलते हैं। When you, me, animals or plants die, we are buried into the earth, तो हम लोग क्या बन जाता है, सॉइल के लिए मैन्योर बन जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट मुझे सॉइल से मिला, वो न्यूट्रिएंट दोबारा किधर चले जाता है, सॉइल में ही जाता है। दैट इज द न्यूट्रिशन साइकिल। देखो इधर एक डायग्राम दिया है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सन से एनर्जी प्लांट्स को मिलता है, प्लांट्स एनर्जी गोट को मिलता है, गोट से आके टाइगर को मिलता है, टाइगर से ह्यूमन बीइंग, फिर ह्यूमन बीइंग दोबारा हम लोग सॉइल में चले जाते हैं। ओके, ये कौन सा साइकिल हुआ, न्यूट्रिशन साइकिल, करेक्ट है। ऑल थ्री आर हैविंग न्यूट्रिशन साइकिल। वॉल्यूम में नहीं है ना, वॉल्यूम में नहीं है, नहीं आई नो दैट, काफी है मतलब तो बस जाके तो एक्सप्लेन करने थे व्हाट इज द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल कार्बन। अभी ही और ही टोल्ड सर कार्बन का कोई यूज नहीं है। In fact, in geography, we study one part which is which we call this carbon 14 dating. भी क्या होता है? I can find the age of a tree. Yes. I can find the age of a rock. Because you and me and any part of the organisms which are alive, they keep absorbing the carbon. And when they die, they release this carbon back to the environment. तो जितना कार्बन बचा है, कितना परसेंट उसको मेजर करके एक मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 14 डेटिंग। So I can guess, not exactly, हम लोग बोलते हैं ना ये ट्री है ना 500 साल पुराना है, वो अपना आधार कार्ड थोड़ी रख के बैठा है ना, यहाँ जाके बीएमसी एनएमएमसी में मेरा फायदा हो गया, चलना मेरा नाम लिख दो। So this is that method. तो ये कार्बन होता क्या है, whatever after the death with the skeleton, and skeleton में आइडेंटिफाई करना मेल एंड फीमेल को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? ह्यूमन स्केलेटन में इम्पॉसिबल है, मेल एंड फीमेल को हम लोग ये नहीं कर सकते। हाँ, बट विद दिस हिप बोन्स, वो बोलते हैं कि मेन का हिप बोन्स इज लिटिल बिट ब्रॉडर, वो भी बहुत रेयर है। क्या बताएगा कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का है। बट स्केलेटन जो कार्बन 14 उसमें बचा है, उसको मेजर करके बोल देगा he or she was 24 years 54 years जो भी था, बिकॉज उसमें कार्बन बचा है। समझ में आया? So when you die, the same carbon goes back to the earth. What is the next cycle that you have written? नाइट्रोजन cycle. Nitrogen. अभी nitrogen में in your geography or science you would have studied about a plant which is called as nitrogen fixing bacteria. Yes. कौन सा plant का नाम बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। It is called as leguminous plant. Come on, repeat. Leguminous plant. What is this plant? Can you name any plant? Something which makes nitrogen. अच्छा तो क्या है? Makes नहीं है, it absorbs. कौन सा plant है बोलो? अभी बहुत कम है, अभी से मुझे आपको बहुत ज्योग्राफी में दिखाना पड़ेगा। Yes. ग्राउंडनट मालूम है, उसका जो रूट्स है उसमें नोड्यूल्स रहते हैं which can absorb the nitrogen. नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? 78. तो when these fix the bacteria, they grow हुआ, then we eat and we try to dispose that throw. क्या थ्रो करेंगे? उसका जो बचा कुछ है, तो जिसमें जो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब किया, जब उसको हम लोग दोबारा सॉइल में डालते हैं, वो नाइट्रोजन दोबारा किधर जाएगा? सॉइल में ही जाएगा। तो ये कौन सा साइकिल हुआ? नाइट्रोजन। एंड लास्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। अभी आप लोग ये एक्सप्लेन करो ऑक्सीजन साइकिल कैसा होगा। ऑक्सीजन इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, you and me along with animals and plants absorb it and we give out what? Carbon dioxide, which is required for whom?
plants, and when plants take in carbon dioxide they release what? Oxygen. तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? Cycle हो. चलो अभी read करो, and you have any queries please ask. आपके पास एक उसमें है क्या देख ले. The nutrition cycle represents a relationship between living and non-living. Good boy. Read. You got it. Read. It shows the independence of all living things on earth. It operates through the food chain and other processes like food, photosynthesis, transpiration, respiration, etc. ठीक है. The living things are divided into producers, consumers, and decomposers. Plants are the producers of the food through a process of photosynthesis. Energy has its own origin from here. Then there are categories of consumers, herbivores and carnivores. ये सब सबको मालूम है ना? What are herbivores, carnivores? चलो जल्दी read करो. Who live on the producers. At the top of all is man, who can modify its own environment and create changes at the bottom. Do you think even we can modify the environment? Yes, all we do. living things undergo decomposition by the action of saprophytes. चल खत्म करने का उसका काम. चल read कर. हो गया. नहीं मुझे अभी नहीं. किधर read? एक काम करो उसको दे. my boy. Where you left? Tell him. I left here. Parallel. Hey, everyone has made a fair notebook. Pack your bags. Only 2 minutes are left. Okay. Everyone has made a fair notebook. This notebook I will not allow. You? Get you. It's not all in one, है ना? I will not allow. I want a separate geography notebook. This is good. You made a separate notebook, ना? Oh wait, next time तो लेकर आ. तो पेजेस का लिखा हो क्या? उसको फाड़ के चिपका. No. हाँ? Glue उधर पड़ा है. गेट के बाहर. यहाँ पे और कुछ मांगेगा तो दूँ. मांग मिलते. चिपकाने का हाथ देंगे. किसी का काट के दूँ या क्या? Because why I'm saying ना, every chapter I will be giving 5 important questions, which might reflect in your exam. चलेगा इसमें. इजी हो जाएगा. I don't. हाँ, पूछना. Can't you spend the money for buying a A4 size notebook? Say something. Yes, then buy. If not in PTM, I will be raising the same doubt to your parents. आप लड़का बोलते